with polling coming to an end in 3 northeast states, Tripura, Meghalaya and Nagaland, so it's time now for the exit polls. Yes. So what do the pundits say? Which parties are likely to emerge as the favorite as per the exit polls? Can the BJP retain power in Tripura? Will the NPP-led MDA be favorite again in Meghalaya? Will NDPP-BJP combine need to include more allies in the coalition? Well, the exit polls are expected to provide a fair idea of how the high-stakes battle in Tripura, Meghalaya and Nagaland may turn out on results day. So with polling coming to an end in the 3 northeastern states of Tripura, Meghalaya and Nagaland, now it's time for the exit polls, viewers. Yes, so what do the pundits say? So which parties are likely to emerge as the favorite as per the exit polls? So can the BJP retain power in Tripura? And will the NPP-led MDA be favorite again in Meghalaya? And talking about Nagaland, will NDPP-BJP combine need to include more allies in the coalition? Well, the exit polls are expected to provide a fair idea of how the high-stakes battle in Tripura, Meghalaya and Nagaland may turn out on results day. All right, so first the exit polls have come. So India Today, they are predicting 36 to 45 seats for BJP in Tripura, left plus 6 to 11 seats, and 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏, well, 9 to 16 seats. So Ravinder, you can see there. So exit polls for India Today, it has come, and you can see 36 to 45 seats. So it's a clean sweep for the Bharatiya Janata Party in Tripura, Ravinder. ये काफ़ी चौंकाने वाला एग्जिट पोल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। आप देख सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें लेफ्ट पार्टीज की है, उनकी जो दशा दिख रही है एग्जिट पोल में वो दयनीय दिख रही है। 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 उनसे आगे निकल गया है। हालांकि बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया था इस चुनाव में। एग्जिट पोल में ये साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी को पूरा बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 36 से 45 सीट त्रिपुरा में और लेफ्ट पार्टीज को 6 से 11, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 को 9 से 16। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी जो सबसे बड़ी दावेदार माने जा रही थी, कंटेंडर, सबसे बड़ी जो विपक्ष की पार्टी माने जा रही थी, इतने सालों तक सत्ता में रही और इस बार वापसी की उम्मीद भी कर रही थी। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी धराशायी हो गई है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 का उदय हुआ है। चाहे सीट कम हो, लेकिन 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 जो महज 1 साल पुरानी पार्टी है, इससे पहले एक संगठन था 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏, अब पार्टी के रूप में 1 साल में ही 16 सीट अगर उन्हें मिलता है नतीजों के दिन पे तो ये एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन इस वक्त बड़ी जो खबर है आपको बता दें, 35 से ज़्यादा सीट त्रिपुरा में बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन सकती है अगर ये इंडिया टुडे माई एक्सिस का जो सर्वे है ये सही साबित होता है तो। प्रियदर्शनी, Right, so 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 has performed quite well. It is their first time in the assembly election. So 9 to 16 seats are not bad as compared to left party. So, but it is a clean sweep for the BJP as predicted by the India Today exit poll today. And why not, Ravinder? We have seen the campaigning by the BJP, by the Bharatiya Janata Party in Tripura. It was massive campaigning. The top political leaders, the top BJP leaders, they all came down to Tripura, and the results are showing that. Well, India Today exit polls, they are predicting 36 to 45 seats, so it's a clean sweep. But now we were talking about the 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏. It is their first time in the assembly elections in Tripura, and 9 to 16 seats, quite a good number, isn't it, Ravinder? काफ़ी बड़ा इसे माना जाएगा, सफलता कहा जाएगा 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 के लिए। 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 पहली बार पार्टी के रूप में उभरी थी और ये चर्चा हो रही थी कि 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 किसके साथ जाएगी। अब जो नतीजे जो दिख रहे हैं, एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए हैं, नतीजे 2 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल इसके आसपास ही नतीजा रहता है। और इंडिया टुडे माई एक्सिस का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी को जो क्लियर मैंडेट एक तरह से कहा जाए नज़र आता है, क्योंकि हाफ वे मार्क बीजेपी ने पार कर लिया है। 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 की आप बात कर रही हैं प्रियदर्शनी, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 के लिए आज जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो काफ़ी सुकून वाले हैं। उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नतीजों को, लेकिन
जरूर वो राहत महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की थी और लोगों का समर्थन उन्हें मिला, वो एक तरह से इतिहास कहा जाएगा त्रिपुरा में। Right, and quite a sizable number of votes were recorded in Tripura. We have seen during the voting day. Well, Northeast Live, not to forget, Northeast Live is the only channel which has, which have covered Nagaland, Tripura and Meghalaya elections extensively. And we have seen the campaigning by the BJP and BJP leaders, the top BJP leaders. They have come down to Tripura. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister 𝗟𝗜𝗙𝗪𝗓, Uttar Pradesh Chief Minister 𝗏𝗓𝗍𝗓, and NDA convener, the star campaigner of the Bharatiya Janata Party, 𝗡𝗢𝗡 Sharma. Also, earlier only they have predicted that they will perform very well in Tripura, and the results are showing. So the exit polls, India Today exit polls, they are predicting a clean sweep for the Bharatiya Janata Party. So 6 to 11 seats for the left plus, and 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘𝗧𝗏 6 to 19, 9 to 16 seats, and others 0 seats. So, if we compare Rabinder, the 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘𝗧𝗏 and the left plus, so there's a vast difference. The left parties, they were ruling Tripura for so many years, and now 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 has performed very well in compared to the left parties. जी बिल्कुल, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 ने काफ़ी अच्छा प्रचार भी किया है, और 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 के जो बुबागरा हैं, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 के चीफ हैं 𝗡𝗢𝗡 उनकी काफ़ी पैठ है लोगों के बीच में, और लोग उन्हें महाराजा की तरह एक तरह से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये नतीजा एक तरह से उनका ही करिश्मा का नतीजा है कि 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 ने ये आज जो प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं एग्जिट पोल के, वो उनका ही एक तरह से छवि जो है 𝗡𝗢𝗡 का, उसी का नतीजा है जो हमारे सामने है। लेकिन इसमें जो सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है एग्जिट पोल के नतीजों को अगर देखें, प्रियदर्शनी एग्जिट पोल में 6 से 11 वाम पार्टियों को, यानी लेफ्ट पार्टी को मिले हैं। ये काफ़ी गौर करने वाली बात है। प्रियदर्शनी, इस वक्त हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पिनाकी दास से। पिनाकी, सबसे पहले तो त्रिपुरा की खबर हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में। आज जिसका सबको इंतजार था, चुनाव संपन्न हो चुके हैं तीन राज्यों के, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, और जिसका इंतजार था वो सामने आया है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, और एग्जिट पोल में सबसे पहले नतीजा त्रिपुरा का सामने आया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस के जो सर्वे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। क्लियर मैंडेट पिनाकी, त्रिपुरा में 35 से 45 सीट बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वाम पार्टी जो लेफ्ट पार्टी प्लस उसमें हम कांग्रेस को भी रख सकते हैं। 6 से 11 सीट मिलने का प्रोजेक्शन है एग्जिट पोल में, और 9 से 16 अकेले 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 पार्टी जो किसी के साथ नहीं थी, 9 से 16 अदर्स में 0 है। ये एग्जिट पोल के नतीजे आपको बता रहे हैं पिनाकी। इसको अगर त्रिपुरा की जनता के बीच में आज ये जा रहा है ये खबर, तो किस तरह के रिएक्शंस वहां देखने को मिल रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल के लिए काफी दिन से लोग वेट कर रहे थे, पर इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके लिए वेट कर रहे थे, इसलिए आज 7 बजे वो आया है। और लोगों में इसको लेके काफी उत्साह है कि एग्जिट पोल क्या आता है। हालांकि लोकल लेवल से भी जितने एग्जिट पोल किए हैं उसमें बीजेपी को ही आगे दिया है, और सभी ने ऑलमोस्ट बीजेपी रिटेन करेगा त्रिपुरा में, ऐसे नतीजे आ रहे हैं। और 35 के एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी को दे रहे हैं। हालांकि आज कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उस एग्जिट पोल कितना ग्राउंड लेवल पे उसको लेके किए हैं, इसको लेके सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी पहले से ही बोल रहा था कि उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगा और 35 से 37 सीट उनको क्लियर मैंडेट मिलेगा, ये उनका दावा था। और अपोजिशन जो लेफ्ट और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं, इनका ये दावा है कि बीजेपी डबल डिजिट नहीं कर पाएगा। पर जितने भी नेशनल लेवल पे एग्जिट पोल्स वो सारे क्लियर मैंडेट दे रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी इस बार जो पूरा चुनाव लड़े हैं ये टोटल पॉजिटिविटी और डेवलपमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं। हालांकि अपोजिशन ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो कि 2018 इलेक्शन का जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं किए, लोग इसको ठीक तरह से जो उनसे उम्मीद थी वो फुलफिल नहीं किए, तो उनको और वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ है, जो लोगों में पीस चाहिए था वो नहीं है, इसलिए लोग निकल के आए हैं। और इसका
real exact. जी पिनाक जी, हम बातचीत जारी रखेंगे एग्जिट पोल पर, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। So now the exit polls predictions have come, and we have India Today exit poll predictions. So as per India Today survey, well, it's a clean sweep for the BJP, 36 to 45 seats. So we have our assistant news editor Pinaki Das from Agartala joining us over the phone line now. So Pinaki, yes, so it's a clean sweep for the Bharatiya Janata Party as per the India Today Access My India survey. Pinaki, so your take on this? And 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 has also, they have also performed quite well when it was their first time to take part in the assembly election. So as per that, they have, as per the survey, it's 19 to 16 seats for the 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏. Exactly. BJP has been given a clear majority, absolute majority with 36 to 45, which is a huge number, and it is even more than as BJP was claiming. That the result this time will be better than the 2018 election, and they have been totally playing on the card of development that Tripura has seen, particularly under the double engine government, and that is what BJP was claiming. But left has been given 6 to 11, which left would not be happy with, because left and the Congress, those who have come together in the seat sharing, they had claimed that they will be a tsunami this time in favor of this left and the Congress, which BJP people won't accept it, like it has been in West Bengal. It will be unacceptable, particularly from the both party. And on the other hand, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏, which is a new party led by the Royal CM 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏𝗘 for the first time in the assembly election. In last ADC election also, we have seen as it has done very good results, and this time, though they were claiming more, but as per this exit poll, we can see they have been given 9 to 16, but still it's good enough for a new party, a new regional tribal party coming with 6 to 11 with 20 seats reserved for the indigenous people. It's a very good result that way also, if we see into. And however, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 today also he claimed that they are going to be the largest single party, though may not go to the for the government, they would prefer to be in the opposition. But BJP has been given a sweep with 36 to 45. That is what जी पिनाकी हमारे साथ बने रहिए, पिनाकी हमारे साथ बने रहिए। अपडेट आ रहे हैं, लगातार अपडेट आ रहे हैं, तीनों राज्यों के अपडेट हम आपको दिखाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। सबसे पहले त्रिपुरा के नतीजे सामने आए, नागालैंड के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और इसके बाद मेघालय के नतीजे आ जाएंगे। अब नागालैंड के नतीजे टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी NDPP को 35 से 43 सीट मिलते दिख रहा है, और कांग्रेस को 1 से 3, NPF को 2 से 5 और दूसरी पार्टियों को 6 से 11। जी न्यूज मैट्रिक्स इसके सर्वे हैं, और यहाँ पर जी न्यूज मैट्रिक्स के सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी NDPP को, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, NDPP और बीजेपी का गठबंधन एक तरह से बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, और यहाँ नतीजे भी एग्जिट पोल के वही कह रहे हैं। 35 से 43 सीट बीजेपी NDPP गठबंधन को, और कांग्रेस को 1 से 3 सीट, और NPF जिसने सिर्फ 22 उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 से 5 सीट NPF को मिलता दिख रहा है। तो ये भी बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। प्रियदर्शनी। Right, Ravinder. So Z News, as per the Z News metric survey, well, 35 to 43 seats for the BJP NDPP, Congress 1 to 3 seats, NPF 2 to 5 seats, and others 6 to 11 seats. All right, we have with us over the phone line our editor-in-chief Wasbir Hussain. So Wasbir, first talking about Nagaland, so 35 to 43 seats are predicted by the Z News survey. Wasbir, so your take on this? Well, Priya, I am not surprised by this prediction as far as Nagaland is concerned. BJP, NDPP combined 35 to 43 seats because, NDPP is contesting 40 seats and the BJP is contesting 20 seats. On the whole, the combined is contesting all the 30 seats, all the 60 seats. And now the main opposition party, that is the NPF, the projection says 2 to 5 seats. So nothing to be surprised, because the NPF is only contesting 1/3 of the total seats in Nagaland Assembly. That is, the NPF is contesting only 20 seats.
So, therefore, I mean, this result is not surprising to me. This projection is not surprising to me. Now, one thing also we need to understand is that apart from the BJP and the NDPP, there has been hardly any campaigning by the Congress or, for that matter, the other political parties. Most of the BJP top guns, they had also campaigned in Nagaland. The Prime Minister was campaigned in Nagaland. Union Home Minister Amit Shah was there. The NEDA convener Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚𝗧 had several meetings across Nagaland. Therefore, the whole campaign tempo was built up in favor of the BJP NDPP, and that is the reason why this projection has come, and that is the reason why I am not surprised at this projection. Most significantly, several of the top NPF leaders, including Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚𝗧, the NPF leader and former Chief Minister, he also quit the NPF and joined the NDPP. And apart from Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚, there were several others NPP MLAs who had switched sides just before the election, so making the NDPP stronger. And of course, another thing in favor of the NDPP-BJP combined is the declaration by both the NDPP as well as the BJP about the chief ministerial candidate, that 𝗡𝗢𝗥𝗑𝗧𝗛𝗚 will be the chief ministerial candidate. In fact, starting from the Prime Minister to the Union Home Minister to the NEDA convener, everybody said that NDPP-BJP is going to form the government under the leadership of 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚. It was a very, very clear-cut message given to the people that, that 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 will be the leader of the combined. And moreover, another reason, Priya, is that for 1.5 years before the elections, there was a party-less government. In Nagaland, and NPF was also a part of it. Now, what happened closer to the elections? The NPF and the BJP continued with their alliance, whereas the NPF was absolutely sidelined and left out. That is one of the reasons why this has happened. This projection is like this today. Now the NPF leaders have also told our channel very, very categorically that they were not finding candidates for the 60 seats, and they were also categorically saying many times that they were short of resources. That meaning that they were short of funds and so on. So on the whole, considering all these factors, I'm not surprised at this projection. Right, Wasbir, we also have predictions coming in by the Z News survey for Meghalaya, where for NPP they have predicted 21 to 26 seats, TMC 8 to 13 seats, BJP 6 to 11 seats, and others, including the UDP and other regional parties and independents, 13 to 25 seats, Wasbir. Well, we will have the figures on the screen shortly, Priya, but the fact remains that, there are 5 major political parties contesting the elections in Meghalaya this time round, and out of which the BJP is contesting 60 seats, the Congress is contesting 60 seats, the NPP, which has been the dominant partner in the outgoing government, NPP is contesting 57 seats, the Trinamool Congress is contesting 56 seats, and the UDP is contesting 46 seats. Therefore, there is definitely chances of a fractured verdict. Right. So these are the figures. There's the chances of a fractured verdict. But yes, the NPP being the dominant player, one cannot rule out the NPP. But the fact remains that the NPP also had a lot of anti-incumbency against them. There were a lot of corruption charges being leveled by alliance partner BJP. Therefore, my gut feeling is that the projection is little on the higher side as far as the NPP is concerned. They might emerge. They might emerge as the largest single party, but the tally might not be 26. That is my gut feeling, Priya, at this point in time. Right. And Wasbir, we have also heard the BJP leaders in Meghalaya, where they were quite confident. They were saying today that no government can form a government in Meghalaya. No party can form a government in Meghalaya without their support. Well, you see, that can be said. That is a statement which can be said by the UDP as well, because in the last election, the Congress emerged as the largest single party with 21 seats. The NPP was second with 20 seats. Still, the BJP swung into action. BJP, although it had just 2 members last time, they swung into action and was able to stitch up a coalition. But the fact remains that this time round, the UDP is also contesting a large number of seats in the Garo Hills.
and the UDP is contesting 46 seats. They're one of the oldest regional parties. And now, although we are giving 8 to 13 seats to the Trinamool Congress, but the fact remains that ideology is not much of a issue in issue in Meghalaya, because it's more people look more at the candidates, and Trinamool being led by Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗡𝗔𝗦𝗧, the former chief minister, along with 11 other congressmen. So one cannot totally rule out the capability of the TMC to put up a good performance. So at the end of the day, anything can happen in Meghalaya, but I am finding the projection 21 to 26 of the NPP a little on the higher side, Priya. Right. जी वासबीर, हमारा सवाल आपसे है। वासबीर, मेघालय का अगर हम देखें तो जो उम्मीद की जा रही थी उसी के हिसाब से फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात कही जा रही थी, वही नतीजा हमारे सामने है। लेकिन वासबीर यहाँ देखिए 21 से 26 प्रोजेक्शन है एनपीपी का, और एनपीपी में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एनपीपी को एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर दिखता नहीं है इसमें, कम से कम हम देख रहे हैं। रविंदर, ये देखिए, अगर फ्रैक्चर्ड में इसको फ्रैक्चर्ड में ये जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है मेघालय का, ये मैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर एनपीपी 21 से 26 सीट मिलते हैं तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 5 बाकी है। ये 5 उनको लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का 6 to 11 प्रोजेक्शन किया हुआ है, ये तो एक ही साथ में काम किया हुआ है ऑलरेडी। एंड मैं मान लेता हूं कि अदर्स जो है इसमें 13 से 25 दिखा रहा है, इस अदर्स में डेफिनेटली यूडीपी होंगे। तो मैं अगर एनपीपी 21 से 26 सीट मिलते हैं तो एनपीपी विल बी द डोमिनेंट प्लेयर। ये कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट का रूप से मैं नहीं देखता हूं, रविंदर जी। वासबीर, कांग्रेस का जो जनाधार था वो कहाँ गया है? क्योंकि कांग्रेस हम नहीं देख पा रहे हैं। अदर्स में जो 13 से 25 सीटें हैं अदर्स में, उसमें पीडीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन एनपीपी की जो सीट संख्या थी, जो पिछले अगर चुनाव को देखें तो उससे ज़्यादा इस बार बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। एनपीपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान किस पार्टी का हुआ है मेघालय में? नुकसान डेफिनेटली कांग्रेस का हुआ है। नुकसान कांग्रेस का डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जो सीटें हैं वो टीएमसी में आप ले लीजिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है ये बिल्कुल सही है कि 7 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप विंसेंट पाला के अलावा और पीएम सीएम के अलावा ये इनका कोई बड़े नेता जो है ये कैरिस्मेटिक नेता दिखाई नहीं दे रहा। उनका कैंपेनिंग भी इतना जबरदस्त नहीं रहा था मेघालय में। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ज्यादा ही लॉस है। ये जो लॉस कांग्रेस का होगा वो तृणमूल कांग्रेस या तो यूडीपी या तो बीजेपी में इसका फायदा डेफिनेटली होगा जी। So Wasbir, coming to you, well, talking about the Tripura, well, Tripura both in India Today survey and Z News Metric survey, they have predicted clean sweep for the BJP in Tripura. So why not, Wasbir? We have seen campaigning by the top BJP leaders, by the star campaigners in Tripura, by the BJP, isn't it? So it's quite predicted. Well, Priya, you see, the internal assessment of the BJP in Tripura in the initial days of the elections, during the run-up to the elections, was pretty bad. The BJP was extremely worried about its performance in Tripura. Therefore, after that projection, this was an internal projection of the BJP, but later on, the BJP unleashed its might, unleashed its star power in Tripura. They took Tripura by storm. They toured the length and breadth of the state, from the Prime Minister to the Union Home Minister to the party president to the NEDA convener, you name it, and all these leaders were there in Tripura. They had done dozens of rallies across Tripura. These were large rallies, right, and that is largely swung the mood of the people. There were road shows by both the NEDA convener, there was the road show by the Union Home Minister, there were road show by the Prime Minister. So all these things turned the tide in favor of the BJP in Tripura. And of course, the Congress CPM, there was a lot of disgruntlement within the Congress for contesting just 13 seats, because the CPM left were contesting 47 seats in Tripura. There was a lot of resentment within the Congress. It was just a token presence in 13 seats. So these were one of the reasons why the main opposition party, the Congress and the CPM, is not expected to perform that well. And yes, the Tripura Mortar, despite the Tripura Mortar's claim that they have a statewide appeal, the fact remains that
that it's a tribal-based political party. But the fact, if the Tripura Motha gets 10 seats to 15 seats in the first debut election in the state assembly, that will be a huge achievement for Tripura Motha, led by 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏, the royal scion, and the Tripura Motha chairman. And therefore, that will also once again be able to reinforce the point that they are demanding their demand for a separate Tripura land. We cast ice among the tribal people. So this is the scenario. I'm not surprised with the prediction as far as Tripura is concerned, where the BJP is seen to have a clear lead. जी वासबीर, दो सर्वे हैं एक्सिस माई इंडिया और मैट्रिज जी न्यूज मैट्रिज के, उसमें दोनों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया गया है। त्रिपुरा में बीजेपी के जो नेता हैं माणिक साहा, उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। वासबीर, क्या उनका कद अब इस चुनाव के बाद बढ़ गया है? क्योंकि हमने देखा कि डोर टू डोर कैंपेन को उन्होंने ही नेतृत्व दिया था। लेकिन ये भी हमको जानना पड़ेगा रविंदर, के उन्होंने जो डोर टू डोर कैंपेन था वो लार्जली अपना ही खुद का कंस्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। लेकिन यस, कई कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन किया था। तो किस सर्कमस्टांसेस में बिप्लब देब को 4 साल के बाद हटाया गया, ये भी एक रॉन्ग मैसेज दिया था। लेकिन बीजेपी इसीलिए ये सब कि बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था ये बहुत ही खराब था इनिशियली। इसके बाद बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी लिया कि जबरदस्त कैंपेन का स्ट्रेटेजी लिया। ये जबरदस्त कैंपेन किया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सब बड़े नेता त्रिपुरा में आए। उसके बाद बीजेपी का जो मूड ऑफ द पीपल, इट टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ द बीजेपी। तो यही मेरा मानना है कि द मैसिव स्केल कैंपेनिंग, but the campaign blitzkrieg by the BJP is largely responsible for the swing in favor of the party towards the last 2 weeks of the campaign. जी, एक और सवाल वासबीर आपसे त्रिपुरा मोथा को लेकर सभी सवाल कर रहे हैं। त्रिपुरा मोथा को दोनों एग्जिट पोल में लगभग एक ही समान जो है वो सीट दिखाया गया है। एक्सिस माई इंडिया में 9 से 16 सीट और जी न्यूज मैट्रिज में दिखाया गया है 11 से 16, यानी 16 तक का उनका लिमिट दिखा रहा है। कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन त्रिपुरा मोथा उभर तो गई है एक पार्टी के रूप में त्रिपुरा में। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि त्रिपुरा मोथा मेन अपोजिशन पार्टी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि त्रिपुरा मोथा का जो एक्चुअल डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो सिर्फ बीसी है त्रिपुरा मोथा। लेकिन त्रिपुरा मोथा अगर 10-15 सीट ज्यादा कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि त्रिपुरा मोथा इज ट्राइंग। एंड त्रिपुरा मोथा का ये कहना है कि ये ट्राइबल पार्टी नहीं है, ये सबका पार्टी है। उन्होंने नॉन ट्राइबल कैंडिडेट भी ये चुनाव में उठाया है। तो ये सब लेकर के ये मेरा मानना है कि मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा अगर त्रिपुरा मोथा 11 से 16 सीट एक्चुअली मिलता है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज के साथ गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ पर बहुत ही कम सीट दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि दोनों अगर पार्टियों को मिला दिया जाए सीपीआईएम और कांग्रेस को, तो भी कम हो रही है सीटें। इन दोनों पार्टियों के ऊपर में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बीजेपी ने ये जो कांग्रेस और सीपीएम का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, इनको बीजेपी ने हर रैली में बोला कि ये अनहोली अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम मेन राइवल थे। इतना दिनों जो सीपीएम सत्ता में रहे, 25 साल लगातार सीपीएम सत्ता में रहे, उसी टाइम मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस था। तो ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये बीजेपी के हराने के लिए, बीजेपी का उत्थान को दबाने के लिए जो ये अलायंस किया गया, तो उसको लेकर के ये साइड मेरा ख्याल से ये काउंटर प्रोडक्टिव लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा जैसा लग रहा है ये प्रोजेक्शन देख करके। लेकिन ये भी बात है, कांग्रेस जैसा एक बड़ा पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो त्रिपुरा के एक समय में मेन अपोजिशन पार्टी था, वो सिर्फ 13 सीट आउट ऑफ 60 कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसको मैसेज किया गया, तो इसको लेकर के आई एम नॉट सरप्राइज दैट द कांग्रेस एंड द सीपीएम इज शोन टू गेट बिटवीन 13 to 21 सीट। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ ही पलों में फिर एक बार कोशिश करेंगे आपके पास आने के लिए वासबीर। लेकिन इस समय एग्जिट पोल के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं, जिसका इंतजार था सबको। एग्जिट पोल के नतीजे तीनों राज्यों के, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के सामने आ गए हैं, और ये कहा जा सकता है कि तीनों राज्यों में बीजेपी को फायदा मिलता
और बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि मेघालय में थोड़ी बहुत असमंजस जरूर लोगों को लग रही है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व में एमडीए सरकार थी और इस बार फिर एनपीपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एग्जिट पोल के नतीजों में साफ हो गया है कि एनपीपी बड़ी पार्टी मेघालय में बनकर उभरी है।